Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing a one-shot session on your next chapter of mathematics, that is statistics. So this chapter is very important because this is even there in your grade 10th. So yes, today we are going to discuss this chapter one shot में पूरी video में it's like a little bit lengthy session, but ये पूरी video में we are going to complete the full chapter of statistics. This is an important chapter. Okay, now today we are going to do all the theories and everything. Okay, and at the end of the session we are even going to solve some NCERT questions. Okay, now one more thing students, the topic of measures of central tendencies it is removed. CBSE ने NCERT के latest syllabus के accordingly statistics में से measures of central tendency is removed. So that is why all the graph का plotting, data handling, everything वो लोग हम लोग आज वो कर लेंगे and along with the questions. So central tendency is out of the chapter, so it's easy to us. Okay, so let us start with doing statistics. Make sure you're liking this video, share with your friends, and subscribe the channel right away if you did not do it till now for more such informative videos. So let us start with statistics. So basically students, in your previous grade आपने पढ़ा होगा data handling, फिर आपने bar graph बना ये सब, right? Similarly this year instead of data handling उन्होंने लिख दिया statistics. Same है, data को arrange करना, plot करना, that is what statistics is. Okay. अब the question comes, what is data? Data का मतलब क्या होता है? So the facts or figures which are numerical or otherwise collected with a definite purpose are called data. Data क्या होता है? Nothing but information हो गया, ठीक है? Numbers में हो गया, alpha numerical हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ information है, कुछ ऑब्जर्व किया हमने, नोट डाउन किया, वो डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन मिली, दैट इज डेटा. ओके, कुछ पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज डेटा. डेटा होते हैं टू टाइप्स के, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा मतलब द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर अ डेफिनेट प्लान और पर्पस. मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है, एज इन द पर्सन हु इज टेकिंग डेटा, उसने डायरेक्टली जाके लिया, ठीक है, दैट इज प्राइमरी. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गए, ले लिया डेटा. ओके, secondary means that it is not collected directly but obtained from some other sources, that is secondary data. For example, now I am saying some sentences on my own. Okay, that is primary data. Okay, I made it from my own. But if I'm looking in the textbook and that I'm telling to you, that is secondary data. ओके, प्राइमरी डेटा मतलब हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं, हमने इंफॉर्मेशन हमने खुद ने ली और यूज कर ली. सेकेंडरी मीन्स हम दूसरे से जाके पूछ रहे हैं, किधर सोर्स से ले रहे हैं, एंड देन वी आर टेलिंग, दैट इज सेकेंडरी डेटा. ओके, नाउ डेटा तो कलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, बट नाउ डेटा इज नॉट वन, एक दो नंबर्स या वैल्यूज नहीं होते डेटा में, डेटा हैज अ लॉट वैल्यूज. सो जो भी इन्वेस्टिगेटर है, द पर्सन हैज टू कंडेंस देम, उनको एक टैबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा सो दैट वी कैन स्टडी द डेटा. डेटा का क्या करना है, कुछ करना पड़ेगा ना, वी हैव टू स्टडी देयर साइलेंट फीचर्स. सो वी हैव टू डू एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा, और वो अरेंजमेंट को कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ data can be arranged in three ways. First one, serial और alphabetical order. मतलब नंबर है तो सीरियल नंबर वाइज लिख दो, 1 2 3 4 वैसा लिख दो. अल्फाबेटिकल है तो उनको मतलब अल्फाबेट से तो उनको अल्फाबेटिकल ABC वैसे करके लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, व्हेनेवर आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं तो दैट डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, अब जब भी रॉ डेटा, जो बेसिक डेटा जो प्रोसेस्ड नहीं है, उस डेटा को जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करते हैं, दैट काइंड ऑफ डेटा इज नोन एज अ array और arrayed डेटा. So array क्या होता है, the data which is arranged in ascending or descending order of magnitude. Okay, ये लिटिल बिट कंप्यूटर जैसा टाइप का हो गया. ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स मैथ्स के ऊपर बेस्ड. नाउ रॉ डेटा के एग्जांपल्स देखो. सी,
नाउ फॉर एग्जाम्पल देर आर मार्क्स गिवन ऑफ 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं इन मैथमेटिक्स एग्जाम, ठीक है, 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब ये मार्क्स हमने डायरेक्टली चेक किया, टीचर ने लिख दिया, दैट्स इट। ये रॉ डेटा, दिस डेटा इज रॉ, वी डिड नॉट प्रोसेस इट। Now, it would be less time consuming if these scores are arranged in ascending or descending order. अगर हम इसको ascending या descending में arrange करने, so highest marks, lowest marks, you can easily find out. Correct? So let us arrange in ascending order. छोटे number से बड़ा number. So we'll start from 26, 36, 42, 55, 60, 62 till 98. So this becomes ascending order. और अब ये क्या बन गया, हमने ascending order में लिखा तो ये बन जाता है हमारा array. और यू कैन से एवरेज डेटा। सो अभी हम इजीली बोल सकते हैं कि 26 इज द लोएस्ट मार्क एंड 98 इज द हाईएस्ट मार्क, सिंपल, correct? So that is what is raw data, and when we write it, it becomes average data. Okay, अब look over here, this chart shows you कि इतने इतने बच्चे हैं, उन्होंने कितने कितने ट्रीज प्लांट किए, ओके, उन्होंने कितने ट्रीज प्लांट किए, ऑलराइट। ना लुक ओवर हियर, अब हमको इसका टेबल बनाना है। वी विल ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पे इधर को हमको एक रेंज लेंगे, इन दैट रेंज वी विल राइट कि 0 to 10 में कितने हैं, फिर 10 to 20 में कितने हैं, राइट, दैट वे। सो लेट अस स्टार्ट। पहला देखो 0 to 10, फर्स्ट रेंज इज 0 to 10, हाउ मेनी, 2 चिल्ड्रन, लेट्स सी 0 to 10, 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so 2 we have, correct, 0 and 9 है 0 to 10 में। अब next is 10 to 20, 10 to 20 के कितने रेंज है, 10 to 20, so 19 15 12 17, again 19 18, then again 19 12, करेक्ट, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट, और वन मोर ये हो गया 10 भी। सो हाउ मच वी हैव, 9 नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द रेंज ऑफ 10 to 20। अब नेक्स्ट इज 20 to 30, 20 to 30 के रेंज में 23 24 26 27, again 26, then 22, then 30, then 29 21 29 26 23 20 29 25 24 27 21 29। so देखो large number is how much, 20 to 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18, so 18 number of children। और 30 to 40 में 30 to 40 में we only have 1, ठीक है, only 30 is there, and इसमें 29 भी included है, हाँ, so 30 is only there, right? So hence this is the data we write। अब the kind of data is known as a frequency distribution table। ऐसे जब हम arrange करते हैं, that is known as distribution table। अब देर आर सम टर्म्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ इसमें हमारा जो डेटा था दैट वाज लार्ज, ठीक है, हमारे बहुत सारी वैल्यूज थी, करेक्ट। सो हमने उनको ग्रुप्स में अरेंज किया, क्या क्या ग्रुप्स थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सारे ग्रुप्स थे। नाउ each of the group is known as a class interval or class। What is the group known as? Class। So how many classes are there in this data table? There are 4 classes, 1 2 3 and 4, correct। Now in a class चलो let's take a 10 to 20 का class, 10 to 20 का class I took, okay। Now in 10 to 20 का class, the lower value क्या है, 10, correct, that is known as the lower class limit। The lower value of the class is known as the lower class limit, and the upper value, the highest value of the class is known as the upper class limit। So you understand, हमारा डेटा, उसमें डेटा में क्या है, वी हैव क्लास इंटरवल्स, ठीक है, क्लासेस है,
each group is a class. उस class में जो lowest value that is lower class limit and जो highest value है that is upper class limit. Okay. अब if I tell you कि you have to find the size of the class. Size of the class means 10 minus 0, 20 minus 10. So throughout the data हमारा size of the class is 10 only. 10 minus 0, 10. 20 minus 10, 10. 30 minus 20, 10. 40 minus 30 be 10. So the size is 10. So what do you understand? Each group is known as class interval or class. Lower value of class is lower class limit. Upper value is upper class limit. And size of the class is upper minus lower. Okay, that is the size of the class. Okay, now look over here. Here is an example of discrete frequency table. Now there are 20 children given, so 20 families given a number of children in them. So now here you see 1, 2, 3, 4 and 5. These are only the numbers 1, 2, 3, 4, 5. बस यही numbers है, correct? So can we write this? हम लिखते हैं कि classes क्या 1, 2, 3, 4, 5 है. That's it. ज़्यादा values नहीं है, correct? Now वी कैन राइट कितने फ्रीक्वेंट है. 1 कितनी बार आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5. 5 बार आ रहा है तो वी विल राइट हियर 5. देन राइट द टैली. राइट द टैली मार्क. करेक्ट. अब नेक्स्ट लेट्स से 3. 3 कितने बार आ रहा है. 1, 2, 3, 4. 3 4 टाइम्स आ रहा है. सो अगेन ड्रॉ द टैली. करेक्ट. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल. आपने अपना डेटा लिख दिया कितनी वैल्यूज है, देन उनको टैली बार्स और फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ लुक एट द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल. ठीक है. कंटिन्यूस. अब देखो इसमें नंबर्स ज्यादा है एंड द ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट. सारे नंबर्स डिफरेंट है. इसमें क्या था, इफ यू सी इन दिस यू कैन सी इजीली दैट द नंबर्स आर 1 to 5 वो सारे रिपीट हो रहे हैं. 1 1 2 3 4 3 2 1 1 4. so नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. but your numbers are not getting repeated, isn't it? Numbers are not getting repeated. So what we have to do is हमको बनाना पड़ेगा रेंज में. Correct. So here if you see what are the ranges. See हम 20 to 30 लिख दिया, 30 to 20, 32 to 34, 34 to 36. ये values है हमारी class values. Correct. This is my class. Correct. This is my class. Correct. Then the lowest value 28 क्या है, lower class limit. 30 क्या है, upper class limit. Then what is the size of the class? 30 minus 28, 2. 32 minus 30, 2. So 2 is the size of the class. So अभी 28 से 30 में कितने कौन से temperatures and decimals you can write. Then similarly 30 to 32 that. और फिर again tally marks में लगेगा frequency कितने frequent है वो. ठीक है. So the main thing is continuous frequency में you will have different numbers, different set of data where it's not getting repeated. So you have to use the continuous. Whenever your data is getting repeated, you will use the discrete form of data. Okay. अब look over here. Classification of data based on class intervals. ठीक है. क्लास इंटरवल देखो इसमें है 1000 to 1099, 1100 to 1199. ठीक है. These are my class intervals. अब inclusive methods इसको exclusive कैसे किया हमने? We made it the exclusive method as 99.5 to 1999, sorry 1099.5. Then 1099.5 to 1199.5 वैसे. Correct. So whenever inclusive method is used, it is necessary to make adjustment. अगर हमको correct classes निकालनी है continuity में, so we have to adjust the inclusive method. So AB एक क्लास है, A-B एक क्लास है इंक्लूसिव मेथड में. सो एक्सक्लूसिव में क्या होगा, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला A माइनस H बाई 2. ओके. A माइनस H बाई 2 माइनस B प्लस H बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज. अगर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, सो यू विल यूज दिस. बट A we can say कि ये first value है, B we can say the second value, correct? But what is H? H is the lower limit of the class. A B का जो lower limit है
माइनस करेंगे अपर लिमिट ऑफ द पीछे वाली क्लास, ओके, नॉट द सेम क्लास, पीछे वाली क्लास का प्रीवियस क्लास का डिवाइडेड बाय 2, that will give you the value of h. Or when you find the value of h, you can use the formula and make it into exclusive method. So the same methods are applied here also, no? Same method is written in the form of a, b. So you can use this is the lower class and the upper class of the previous class is given. Then you can divide it by 2, then you will find the value of h. Once you use the value of h, you can use this formula and make it into this exclusive method. Okay, clear? Alright. Now let's move towards an important topic, that is cumulative frequency. A frequency, we know frequency meaning what? Frequency is nothing but when it is the, now how many times it's getting repeated, that is. But what is cumulative? First you understand the definition, then I'll explain it. Whenever we have a discrete frequency distribution, cumulative frequency is nothing but a particular value of the variable. It is the total of all frequency of the values of the variable which are less than or equal to a particular value. दैट मीन्स आप डेटा में कोई भी एक फ्रीक्वेंसी ले लोगे, एनी वेरिएबल ले लो, अब उसकी आपको देखना है कि वो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे. इफ यू हैव टेकन द डेटा, वो डेटा पहले से इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए. ओके, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ आई विल शो यू हाउ. ये देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर गिवन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज आर गिवन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है? 5 फैमिलीज में. 2 चिल्ड्रन 6 फैमिलीज में. 3 चिल्ड्रन 4 फैमिलीज में. 4 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज में. 5 चिल्ड्रन बस 2 फैमिलीज में. ठीक है. अब लेट्स से दैट हमको नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, क्योंकि 4 फैमिलीज में 3 चिल्ड्रन है, 3 4 बार रिपीट हुआ है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेज दैट कि हमको उतने सारे निकालेंगे विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, number of 3, correct? So we want it should be less than or equals to 3. So वो 1 में भी आते हैं, correct? 1 भी तो 3 से लेस है. 1 में कितने? 5 है. प्लस 6 फैमिलीज में 3 से कम बच्चे हैं, करेक्ट? बस 2 बच्चे हैं, तो या वी कैन यूज 6 ऑल्सो. प्लस and itself less than or equals to, so 4 families में 3 children भी है, so plus 3, so 6 plus 5 plus 3, how much it is? 6 plus 5 plus 3 is nothing but 15, correct? 6 plus 3 8, 8 क्या? 9 10 11 12 13, correct? So sorry, yeah, sorry, 4 4, this is 4. 4, 6 plus 4 plus 5 we will do, what will get? 15. So 15 becomes the cumulative frequency. Okay, now look over here. Next, let me erase the C. Next, see the answer. Next value देखो. Next है number of children 4 है. ठीक है. Families कितनी? 3 families में. So what will be cumulative frequency? 3. कौन सी families है जिसमें 4 या 4 से कम children है? Correct. 4 या 4 से कम children है. So 5 plus 6 plus 4 plus 3. कितना हुआ? ये पूरे ऐड करेंगे, विल गेट 18, करेक्ट? बिकॉज 1 2 3 वो 4 वो फ्रीक्वेंसी है 4 से लेस, बट 4 के भी इक्वल है, सो वी विल टेक दैट आल्सो. सो cumulative is 18. Alright. Now some important note. What is the important note? Whenever we have group frequency distribution, cumulative frequency कोई भी क्लास की is the total of all frequencies. ठीक है. एंड cumulative frequency के लिए always you have to write the class in ascending order. You cannot write it in descending. You have to always write it in ascending order for the proper calculations. Okay. अब जाते हैं towards the easy part of the chapter, that is bar graphs. Okay, representation of data. Very easy part. Bar graphs. You know bar graphs क्या होता है? Basic definition, you know we have two axes, x axis, y axis. X axis पे हम लिखते हैं the variables, y axis पे हम लिखते हैं values. Then we draw the bars, correct? And then it represents the data.
Mathematically, you will say that a bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn. So ये जो bars है, कितने भी bars उन सब की जो width है, the width should be uniform है. ऐसा नहीं एक का एक thin है एक thick है, नहीं. All the bars should have equal width and the space between the दो bars के बीच में जो space है that should also remain same. दैट इज अ बार ग्राफ. और डबल बार ग्राफ क्या, सेम मेथड्स है, ठीक है, सेम मेथड्स है, बस वी आर हैविंग टू सेट्स ऑफ डेटा, दो सेट्स ऑफ डेटा है और उनको साइमल्टेनियसली हमको रिप्रेजेंट करना है. सो दैट वे वी आर गोइंग टू यूज. फॉर एग्जाम्पल देखो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्कूल ए में ये लाइट ब्लू जो है दैट इज फॉर वॉकिंग, डार्क ब्लू इज फॉर let's say bus. Okay, so that is how you have to do. Double bar graph में you have two sets of data. A bar graph में एक single set दिया, उसको मस्त अपना bars draw करना है and then done. Okay, look at examples. Population of four major cities in India in a particular year is given. We have to construct a bar graph for the data. Okay, now look over here. मुंबई 120, कोलकाता 130, 150 दिल्ली और 80 चेन्नई. ठीक है. नाउ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लॉट करने से पहले नाउ यू कैन नॉट राइट कितना मैक्सिमम 150 है, सो फ्रॉम 1 to 150 तो नहीं लिख सकते हम ग्राफ पेपर पे, राइट. सो वी हैव टू फाइंड अ स्केल. You have to find a scale कि 1 unit कितने वैल्यू का इक्वल होगा. So here if you see, if we use the scale of 50 units, 50 यूनिट्स का स्केल यूज करते हैं तो वी कैन इजीली ड्रॉ, करेक्ट. 50 to 150 लिख दिया और उनके बीच बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगे. सो यू विल ड्रॉ द एक्स एक्सिस, उसमें सारा वेरिएबल लिखोगे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. उसके बाद वाई एक्सिस पे यू विल प्लॉट द वैल्यूज फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट. Correct, you have studied in coordinate geometry, right? Then 50, 100 and 150. ठीक है. Now you can easily plot it. 120 will be what? Above 100. 130 150 से थोड़ा नीचे. दिल्ली एग्जैक्ट 150 है और चेन्नई 80 है, सो 100 से थोड़ा नीचे. एंड दैट इज हाउ यू कैन इजीली प्लॉट इट. अब डबल बार ग्राफ. Look at double bar graph. Double bar graph, now what you have the marks of a percentage of class 10th and class 12th in CBSE examination for 5 years. अब देखो, the years are given, ठीक है, ये years जाएंगे हमारे x axis पे. Okay, that will go in the x axis. अब y axis पे क्या जाएगा, these values. अभी we have two sets of data. 10th के भी डेटा है, 12th के भी डेटा है. सो वी आर गोइंग टू यूज डबल बार ग्राफ. 1994 से 95 में वी विल रिप्रेजेंट हियर जो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट यू कलर इट, कलर या कोई पैटर्न बना दो, क्योंकि लाइक हियर इफ यू सी पर्पल इज फॉर ग्रेड 10th and blue is for grade 12th. Okay, so that is how you have to write it. So 1994 से 95 में 10th का था 90, 12th का था 95. So you have to चिपका के draw both the graphs. Okay, scale you can take, it's 90, 95 that way only, so you can take 0 to 100. So the scale is of 10 units each. Okay, so that is how you will draw the double bar graph. अब आता है नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ बार ग्राफ, दैट इज हिस्टोग्राम्स. हिस्टोग्राम्स आर इजी, ठीक है. मैथमेटिकली इफ आई से इट इज नथिंग बट अ हिस्टोग्राम और अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स with class intervals as bases and heights proportional to the corresponding frequencies such that there is no gap between any two successive rectangles. This is mathematical definition. Easy definition क्या है, हिस्टोग्राम इज नथिंग बट अ बार ग्राफ ओनली. जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं बार ग्राफ, द सेम वे यू हैव टू प्लॉट हिस्टोग्राम आल्सो. जस्ट द थिंग इज द बार ग्राफ, जो बार्स है ना वो सारे एक दूसरे से चिपके रहेंगे. वी हैव टू कीप नो स्पेस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स. ओके, हिस्टोग्राम बार ग्राफ में क्या होता है, विल ड्रॉ लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, करेक्ट. But in a histogram, we have to draw how much? We'll draw like this, then like this, then we have to draw like this, then like this. So no space have to give away. Okay. Now look over here.
bar graphs versus histograms. Bar graphs have gaps between them, correct? Gaps है. And one x axis पे you can only represent the variables, y पे you have to write the values. But histogram में you can take number ranges also. ठीक है? Let us see an example for it. ये देखो. In the following distribution of weights in kg, 50 people है, the weights are given. 50 to 55, 12 people है. 55 to 68, 60 to 65, 5, 65 to 74 ऐसा है. Okay. Now, look over here. The thing is 12, 8, 5, 4, 5. You can take the table of 2. 2 का टेबल लिख लिया हमने 12 तक. Number of persons. Y axis पे number of persons. अब weight. Weight we cannot write 50 to 55, 60 to 60. No. It is written in this way, right? So हम लिखेंगे 50 to 55 first group. फिर 55 to 60. फिर 60 to 65, 65 to 70, like that you will write, okay? You will not write like ये first group है 50 to 55. फिर ये 55 to 60, no, you will write it in the form of continuous numbers. ठीक है, continuous numbers you will write it, and then you put a kink. You will put a kink because after 0 we are directly starting from 2, so एक kink mark डालेंगे हम. Okay, then you will plot the data. Remember, no space has to be given. Continuous form है, कोई space भी given नहीं है. Alright. Next type, हमने पढ़ा what is a bar graph. We studied double bar graph. We studied histogram also. Now let's study about frequency polygon, the last topic of your chapter statistics. What is frequency polygon? Frequency polygon is nothing but it is another method or how we can represent the frequency distributions graphically. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम उसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. पहला तो अगर हिस्टोग्राम्स यूज करें तो उसके साथ हम प्लॉट कर देंगे, या दूसरा मेथड है विदाउट हिस्टोग्राम्स आल्सो. ठीक है, so both of them we are going to see with examples, and then we will go towards some important questions. ठीक है, so look over here. What is the construction of frequency polygon by using a histogram. ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो उनका एक वो हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लो. ओके, यू आई विल शो यू द एग्जांपल, सो डू नॉट वरी. एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर ले. लेट अस सी विद द एग्जांपल साइड बाय साइड. ठीक है, नाउ लुक ओवर हियर. ये आपको डेटा दिया गया, करेक्ट? दिस इज द डेटा गिवन टू यू, करेक्ट? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, that frequency is given. अब फर्स्ट स्टेप इज एज पर एल्गोरिदम. फर्स्ट स्टेप क्या है? एक हिस्टोग्राम बना लो, करेक्ट? वी ड्रॉ हिस्टोग्राम इज रेडी. ओके, दिस इज द इग्नोर दिस लाइंस. ओके, इग्नोर दोस ब्लू लाइंस और नो. ओके, नाउ रिमेंबर बस एक हिस्टोग्राम है. नेक्स्ट, obtain the midpoints of upper horizontal side of each rectangle. अपर हॉरिजॉन्टल साइड, ये एक पूरे की जो मिड पॉइंट है दैट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, उनकी हाइट ढूंढो. लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ न्यू स्लाइड. ओके ओके, so look over there. I have drawn a rough histogram. Okay, this is a rough histogram, correct? Rough histogram. Before I show you the example, so step 1 क्या था? Data is given. As per the data I have drawn a histogram. Next, हर बार का, हर रेक्टेंगल का अपर हॉरिजॉन्टल साइड, दिस साइड, इस साइड का वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट. ठीक है, you have to find the midpoint. You will draw with scale only, so you'll understand what is the midpoint. Midpoint क्या है? That you will have to find out. So see, I'll do here. I'll just roughly do it, correct? So this is one midpoint, other midpoint, then third, your. These are the midpoints of the rectangles. Okay, upper horizontal, this is the midpoint. Okay, हम we mark the midpoints also. ठीक है, midpoints mark हो गए. Next step, join this midpoints of the adjacent rectangles of the histogram by dotted line segments. Remember, आप straight lines नहीं draw कर सकते. You have to draw it dottedly. You have to draw dotted lines. So let us draw. इनको connect करो. You can connect this. Okay, connect it and make the dotted lines. You will connect these dotted lines. Okay, हो गया connect. Okay, next step, it's not completed.
Now you have to obtain the midpoints of two classes of zero frequency. दो क्लास इंटरवल लेने होंगे जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है. दैट इज एक्स एक्सेस पे जो लेफ्ट साइड पे होगा एकदम, और लास्ट वाला जो होगा सबसे राइट पे. सो इफ आई एक्सटेंड इट हियर, सो इधर तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, राइट, दिस इज नेगेटिव, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है. सो आई विल कनेक्ट इट हियर, आई विल पुट इट ओवर हियर. और इस साइड पे जो भी वैल्यू है, ओके, देयर उस पे भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमको डेटा तो बस इधर तक दिया गया. सो आई विल इवन कनेक्ट इट टिल हियर. ठीक है, सो ये पूरा एक पॉलीगन बन गया. दिस इज द प्लेन सरफेस और ये अंदर का पूरा शेप है. So with this, all complete the midpoints and then you form your entire histogram. Now I will shade this quickly and show you. So if you see here, whatever dotted lines we drew, with respect to that I shaded the full region. So can you see we can get a polygon here? Correct, this is the base, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shaded shape it is, correct? So that is how you draw a frequency polygon, but हमने histogram use किया. Here you see, same type of example is there. Like this we drew the histogram, correct? एक histogram we constructed. Alright? Now, next is when how to draw without a histogram. Correct? When हमारा histogram नहीं है, then how will we draw? So first step is compute the midpoints of the class intervals. ठीक है, this is class interval 0 to 2, 2 to 4, 5 to 6. ठीक है, what you have to do is that compute the midpoints. ठीक है, जो क्लास मार्क्स है, क्लास मार्क्स मतलब उनके मिड पॉइंट्स. 0 to 2 का मिड पॉइंट क्या है? 1. 2 to 4 का क्या मिड पॉइंट है? 3. सो दैट यू विल राइट इट. ओके, नाउ रिप्रेजेंट क्लास मार्क्स ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, इनके जो मिड पॉइंट्स है दैट यू विल राइट इन एक्स एक्सिस. और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, करेक्ट, उनको हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे. ओके, इजी. तो फॉर एग्जांपल 0 to 2, व्हाट इज द मिड पॉइंट? 1. सो ये एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी क्या है? 2. वाई एक्सिस पे, सो 1, 2, 3, 4, दैट वे इट विल कीप ऑन गोइंग. ठीक है, नेक्स्ट प्लॉट द पॉइंट्स xi and fi. xi means the marks, fi means the frequency. ठीक है, now what will you do? Take two class intervals of zero frequency, जिनकी frequency नहीं है. Alright, like we did in the starting one, no, origin से पीछे, and then complete the histogram. So here you see, अब these coordinates are given to you, so you can easily make it. आप ऐसा plotting तो कर सकते हो. You can plot the points on the Cartesian plane and then connect the points. Connect all these points carefully. Okay, connected हो गया. Then zero frequencies को you will mark. Simple as that. Correct, zero frequency mark किया and then you are completed with your frequency polygon without histogram. So दोनों easy है. It is as per you which one you feel is more comfortable for you. All right. In exam, whatever they say you to draw, you can draw. Both of them are easy. Nothing is difficult. Correct. So with this, students, we have completed with the full chapter in just 30 minutes. So statics is हमने पूरा complete कर लिया. Now we are going to go ahead with doing some NCERT based questions. Okay. We will quickly do some NCERT questions. Alright, so let us start. Question number 1. Yeah, this is all from your NCERT exercise. Okay, not nowhere extra. It is all from your NCERT exercise. Alright, now the question number 1 says blood groups of 30 students of class 8th are recorded A, B, O, O, A, B, O, A. Okay, this is the data. Represent this data in the form of frequency distribution table. ठीक है, क्वेश्चन वन से हमको इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखना है. एंड विच इज द कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग ऑफ दीज. सो व्हाट क्या करना है, इट इज रिपीटेड, तो हम बनाएंगे डिस्क्रीट. ठीक है, विल ड्रॉ डिस्क्रीट वन. सो ड्रॉ, राइट 3 कॉलम्स. फर्स्ट ब्लड ग्रुप, कलेक्ट blood group, then second one we will draw the tally, correct, tally, and third is the frequency, matlab how many number of students are there, that is the frequency. All right, okay, now we can write the
blood groups first. So what are the blood groups? A, B, O and AB. These are the blood groups. A, B, O and AB. These are the four blood groups है. अब उनके tally. Okay, let's do the tally now. अब पहला है A. A कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 bar and 9 is a frequency. Okay. So tally will be how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Done. Now, second one, B. B is how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 is the frequency for B. So yes, you'll do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now O. O is how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correct? 12. So yes, this is 12. Let's represent it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? 12. Next one, the last one is AB. AB is how many? 1, 2 and 3. Only 3 are there. 3. So 1, 2, 3. Now the question was which is the most common one. Common one is what? Common means it is where it's or there. Okay. So blood group O. O is the most common because mostly students have O. And the rarest one is AB because only 3 have that. Okay. So this becomes your frequency distribution. Alright. Now next question. The following data on the number of girls to the nearest tens per thousand boys in different sections of Indian society is given. Represent the information above by a bar graph. So you have the section given SC, ST, non-SC, ST, backward district, non-backward, rural and urban. Okay, now we have to write in the form of bar graph. Now let's see. Before going, we can use a scale. 910 से लेके 930 तक है, so we can use 910, 920, 930. That can be the scale over here. Correct. So what do you know? You know the steps very nicely. You have to do two axis, yeah, y axis, correct, and this becomes your x axis. Correct. This is the origin. Put a kink over here because you're not starting from the correct number, so you'll write your scale now. So we wrote our scale 910 to 980. Okay, now we will plot the bar graph. First one, SC. SC scheduled caste is how much? 940. 940, so start here. Start here. 940 is here, correct? So 940 is SC, correct? Next one, ST is 970. 970. Now I do not have a scale and everything here, so I'm drawing roughly, but remember that your width and your the gap between them should be equal. Okay. Next, non-SC/ST are 920. 920, yes, here. Okay, these are non-SC/ST. All right. Next, backward districts are 950. Backward districts are 950. Where is 950 here? Correct. This is 950. What is that? Backward districts, right? Huh. Backward districts. Next is non-backward. Again 920. Okay. Again 920. Non-backward districts. Then rural is 930. Rural is 930 and urban is 910. Urban is 910. So this becomes your bar graph for the given data. Okay, this becomes the bar graph of the given data. Now moving towards the next question, last question here. Okay, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution is given. Draw a histogram to depict the given information. We have to construct a histogram. Okay, we have to construct a histogram. Then write a class interval in which the maximum number of surnames lie. You have to write the class interval where maximum numbers of surnames are there. Okay, so let us draw a histogram.
Now, histogram, the thing is that first thing, in the given frequency, see, the frequency distribution is unequal. Okay, unequal a distribution. 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, that's unequal. Correct. So now we have to find out the um that thing. What do you have to do? Frequency, width, and everything. Correct. So length of rectangle and width of rectangle, we have to find it out because it is unequal. It's unequal. So let us do it over here. So here what we have the letters given 1 to 4, 4 to 6, 6 to that we have given. Now frequency we will find. Frequency is given what? 6, 30, 44, right? It's given to us. So frequency we will write here 30, 44, then 16 and 4. Frequency is given. Okay. Now width. What is the width of the class? 1 to 4. 1 to 4 it is 6, right? So width will be 3. Correct. 4 to 6, 4 to 6, width is nothing but the difference, correct? So 4 to 6, 6 minus 4, 2. Okay, then 8 minus 6, again 2. Then 8 minus 12 minus 8 is 4. And 20 minus 12 is 8. That is the width of the class. Ab length. Length will be what? Length is going to be always in the numerator, you will write 2 by the width into the frequency. That's how you will find it. So length will be 2 by 3 into 6. 3 ones are 3 twos are. That becomes 4. So first one is 4. Then 2 by 2 into 30. That is 30 only. Next one, 2 by 2 into 44. That is again 44. Then next one, 2 by 4, 2 by 4 into 16, that is 8. Then 2 by 8 into 4, that is equals to 1. So length, width, everything we have, correct? Now with respect to that, we can draw one histogram, correct? So you can draw one histogram. How? I'll show you. I'll quickly draw the scale and then I will draw the histogram, okay? So here if you look on the x-axis, we have 10 to 20 given, okay, 10 to 20 given, and then for on the y-axis we have the number of surnames. Number of surnames, this we have written in the scale of 5 stable, all right, and number of letters, okay, that we have written in the x-axis. Now as per the data, what we have, width is 3, length is 4. Width is 3, length is 4. So we will draw this much till 4. Correct? That is the first one. Okay, that is how much? 1 to 4. Correct? 1 to 4. That many letters. Correct? Now, next one I will draw. Okay, next one is 30 and 2. 30 and 2. Now where is 30? This is 30. You have to connect it. It's a histogram. So yeah, 30 and just till 2. So that means you will go to 4, 5 and on 6 you will draw. Okay, next one, 44 to 2. 44 to 2. So 44 will come where? It will be below 45, somewhere over here, and again till 2. So till 8 you will make it, correct? Next, 16 and 4. 16 and 4. 16 will be somewhere over here, correct? Somewhere over here, and 4. So it will go till 12. And the last one is 4 and 8. 4 and 8 means it will be below 5 and till 8. So it will go till 20. So this much. So this becomes your histogram for the given question. Okay, and they even has one more thing, right? Write the class interval in maximum number of surnames like. So maximum number of surname is in 6 to 8 only. Okay, there are 44 number of surnames. Alright. So with this, students, we have completed in 45 minutes. We have completed the full chapter of statistics along with your NCERT questions. I hope it was informative and we learned many new things today, right? In our next session, we'll come up with more such interesting chapters of your grade 9 CBSE. Until then, make sure liking this video, share with your friends, and subscribe the channel right away for such more interesting videos. I'll be seeing you very, very soon in our upcoming videos. Till then, take care and goodbye.